हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप 3.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी आपने फिनिश कर ली है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स and this is part 2. First of all, let us revise one basic thing, that for any two equation we will need to first find the ratio of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. If you find that these three ratio are equal, then that means that lines are coincident. If you find that a1 by a2 and b1 by b2 ratio are equal but c1 by c2 is not equal, then they are parallel line. And if you find that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that means they are intersecting lines. They will intersect in one point. So here one table is there, the table which is given in your textbook also. The first equation where you can see that a1 by a2 is 1 by 3, b1 by b2 is minus 2 by 4. That means a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means line will intersect at one point. In second equation you can see a1 by a2 is 2 by 4, b1 by b2 is 3 by 6, and c1 by c2 is minus 9 by minus 18. All the way they are 1 by 2 if you simplify them. That means they all are equal ratio. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That means they both are the same line, means coincident line. And in third sum you can see that a1 by a2 is 1 by 2, b1 by b2 is also 1 by 2, but c1 by c2 is not 1 by 2. If you simplify c1 by c2, it is 1 by 3. That means they both lines are parallel lines. That means no solution. Coincident line, that means infinite solution, and parallel lines, that means no solution. Now, so these three things is important again. A pair of linear equation which has no solution is called inconsistent. No solution, that means parallel lines, which has no solution, then these two lines are inconsistent. A pair of line equation in two variables which has a solution, only one solution, that means they are consistent pair of linear equation. And a pair of linear equation which are equivalent has infinite many distinct common solution, then they are called dependent pair of linear equation. Again, the three important terms that you will need to understand: inconsistent pair of linear equation, that means a pair of linear equation which has no solution. Consistent pair of linear equation, that means a pair of linear equation in two variables which has a solution, one solution. And dependent pair of linear equation, that means a pair of linear equation which are equivalent and they have infinite many distinct common solution. Now I have taken one question, that from the pair of linear equation in the following problem and find the solution graphically. First of all, you will need to form the pair of linear equation and then you will need to solve it graphically. So first, a question is given that 10 students of class X took part in mathematics quiz. There are 10 students. Remember this thing. The clues which are given inside the question, you will need to identify those clues clearly. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and number of boys who took part in the quiz. So first of all, you will need to find number of girls and number of boys. That means you will first
let us take number of boys be x and number of girls be y. जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसी दोनों चीज़ को आप वेरिएबल ले लो x and y. Now the clue is 10 students of class X took part in the mathematics quiz. That means दोनों को मिला के 10 होगा. X plus y is equal to 10. This is your equation number 1. And second clue, याद रखना हर एक सम में दो ही क्लू दिए गए होंगे, मतलब एटलीस्ट दो क्लू तो दिए ही गए होंगे ताकि आप दो इक्वेशन सॉल्व कर सको. If the number of girl is 4 more than number of boy, number of girl y is 4 more than number of boy, that means x plus 4. Number of girl is 4 more than number of boy, मतलब y is equal to x plus 4. तो ये दोनों इक्वेशन हो गए. Now what we will do, we will make the graph of these two equation. तो दोनों इक्वेशन जो है x plus y is equal to 10 and y is equal to x plus 4 का आप ग्राफ बनाओ तो you will find that the point of intersection is 3 7. जहाँ पे 3 है वो x की वैल्यू है और x हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज, एंड 7 है वो y की वैल्यू है तो 7 हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स. दैट मीन्स the number of boy is 3 and number of girl is 7. Now again a second question I have taken, that half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Means half the perimeter is 36 meter. But दूसरा क्लू उसके अंदर ही दिया है, whose length is 4 meter more than its width. Find the dimensions of the garden. Rectangle के dimensions मतलब length and breadth. तो आपको वो दोनों dimension length and breadth find out करना है. So let the length be x and breadth be y. हम length को x कह लेते हैं, breadth को y कह लेते हैं. अब आपको क्या दिया है, whose length is 4 meter more than its width, मतलब x is equal to y plus 4, ब्रेथ से 4 जितनी ज़्यादा है. और दूसरा पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी. तो हाफ द पेरीमीटर दैट मीन्स एल प्लस बी. और इस केस में लेंथ एंड ब्रेथ को हम x एंड y ले लें तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड द वैल्यू इज 36 गिवन इन द क्वेश्चन. That means x plus y is equal to 36. This is equation number 2. So equation number 1 is x is equal to y plus 4 and equation number 2 is x plus y is equal to 36. Now we will make the graph first. So graph will intersect at the point 20 16. You can see in the figure. So the point of intersection is 20 16. 20 is the value of x. And x we have taken as the length, so length is 20 meter and the breadth is 16 meter. Is that clear? बहुत ही easy sum है लेकिन ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए. Now draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. अभी देखो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, वो दोनों इक्वेशन को आप जब ड्रॉ करोगे तब वो आपको नीचे ऐसे डायग्राम दी गई है वैसे आपको ग्राफ मिलेगा कि x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12. अभी डिटरमाइन द वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड. अभी देखो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बना रहा है उसके वर्टाइसिस भी मैंने हाईलाइट किए हैं. एक वर्टेक्स है 2 3, दूसरा है -1 0 और तीसरा है 4 0. एंड तीसरा भी उसमें बोला है द सेड द ट्राइंगुलर रीजन. दैट मीन्स आपको बाद में ये पहले तो ग्राफ बनाया, तीनों वर्टेक्स को हाईलाइट किया
एंड फिर ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड करना है। बराबर याद रखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों लाइन इक्वेशन दिया है उसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाना है उसके लिए आप हमारा आगे का वीडियो सॉल्व चेक कर सकते हो। 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है दैट लीनियर ग्राफ हमको कैसे बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस, मतलब तीनों वर्टेक्स को आपको डिटरमाइन करना है, मतलब यहाँ पे हाईलाइट करना है इस केस में। एंड देन द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, वो ट्राइंगल को आपको हाईलाइट करना है, शेड करना है। नाउ हियर एक्सरसाइज 3.2 इज गिवन। आप ये एक्सरसाइज के सारे सम्स कर सकते हो, और जो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो जैसे कि पहले का फर्स्ट है वो 10 स्टूडेंट्स वाला हमने किया, दूसरा आपको ट्राई करना है। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपके पास बुक है तो डायरेक्ट उसमें से ही कर सकते हो। ये उसके पीछे का पेज, मतलब के दूसरे क्वेश्चंस, उसमें भी देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर वाला हमने ले लिया है। इसमें कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट वाला भी है, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। If any doubt, you can contact me on my number. Thank you very much, students. Stay safe. Bye bye.